If we discuss emotional intelligence as a concept, in the process, it is very essential to understand the concept of intelligence. There are some psychologists who do believe that emotional intelligence is a type of intelligence, and in the comprehensive definition of intelligence, emotional intelligence is already involved. We have also learned about the concept of multiple intelligence. And when we talk of multiple intelligence, the concept of multiple intelligence is very much contains the concept of emotional intelligence as well. So far as Indian concept of intelligence is concerned, it also contains emotional intelligence as a component of intelligence as a concept. But nowadays, this emotional intelligence has become so intense and important that its separate study has been undertaken in the field of education and psychology. So firstly, as you can see, we shall try to understand emotional intelligence as a concept. Here in the slide itself, the deliberation starts with the intelligence as a concept. So, the intelligence as a concept has widely studied, and in the process, new concepts related to the concept of intelligence like moral intelligence, social intelligence, spiritual intelligence, business intelligence, and emotional intelligence, and many more have crept into. मतलब जब भी किसी कंसेप्ट पे ज़्यादा काम होता है, उसकी शाखाएं फैलती हैं, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स इमर्ज कर जाते हैं। जिस तरह से हमने मोरल, स्पिरिचुअल, सोशल, बिजनेस और के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, लेकिन कंप्रिहेंसिवली जब हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे तो इमोशनल डायमेंशन इज ऑल्सो देयर इन द डिफिनीशन ऑफ द इंटेलिजेंस एज ए कंसेप्ट थ्रू द कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशंस। यहाँ कोट भी है एक पुराना लेक्चर आप याद करिए जिसमें हमने लेक्चर इंटेलिजेंस पे किया है, उसके कंसेप्ट पे वो सारी परिभाषाएं उसमें हैं वहाँ। थ्रू द कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशंस लाइक दैट ऑफ वेस्लर have narrated and described emotion as part of intelligence or as a dimension of intelligence। वो सारी परिभाषाओं को एनालाइज कीजिएगा तो कैसे, लेट्स सी। Wessler's part of intelligence narrates to deal effectively with the environment, which is not possible without good inter and intrapersonal relationship and ultimately without good emotional health। जब हम आपको रिकॉल कर सकते हैं कि वेस्लर ने कहा कि इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। यहाँ उसी एस्पेक्ट को जो लास्ट वाला है, टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। हाउ यू कैन डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट इफ यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट इनफ। तो डीलिंग ऑफ इन्वायरमेंट इज नॉट विदाउट इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। सो इसको कोट करते हुए इसमें आगे है कि विच इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट गुड इंटर एंड इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप। मतलब इन्वायरमेंट को आप इफेक्टिवली डील नहीं कर सकते हैं अनलेस और अनटिल यू आर हैविंग good inter or interpersonal relationship, and if you are having it, ultimately you are having good emotional health and ultimately emotional intelligence। Every comprehensive definition of intelligence has some part of emotional intelligence, and so it may be understood as a part or dimension of intelligence as the global capacity। तो ये भी एक व्यू है साइकोलॉजी में कि जब भी कॉम्प्रिहेंसिवली हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे तो इमोशनल डायमेंशन is a dimension of intelligence, is a part of intelligence, is a component of intelligence। अब 3 नाम आपने पढ़ा भी है, चूंकि आपको एमएड में पढ़ना भी है,
इंटेलिजेंस के, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरीज, गार्डनर, स्टर्नबर्ग और गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, स्टर्नबर्ग का भी मल्टीपल इंटेलिजेंस का, और गार्डनर का भी मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अब गार्डनर में अधिक है, स्टर्नबर्ग में 3 ही है, लेकिन किसी न किसी तरफ इशारा करता है, आगे उसकी चर्चा भी है। सो गार्डनर, स्टर्नबर्ग, गिलफोर्ड एंड मेनी अदर्स हैव प्लेस्ड इमोशनल पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस एज ए होल in their own way of explaining intelligence. But now this area has been exhausted in the way it has developed as a comprehensive and in one sense separate or individual bigger field of study. मतलब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में इतने सारे काम हुए हैं that it has got a separate identity of intelligence, though if we properly analyze the concept of intelligence given by Gardner, Sternberg and Guilford, we could easily conclude that intelligence contains emotional intelligence. But the study of emotional intelligence has become so important, it has got the identity of a separate concept of intelligence, rather emotional intelligence. All meaningful relationships such as parent child, मतलब जो भी मीनिंगफुल रिलेशन, टीचर स्टूडेंट, बिटवीन कलीग्स, एट वर्क, etc., which we cherish and perceive as our strengths, are usually based on dimensions of emotional intelligence. We are attached, we are interdependent, we are sharing. This is all due to emotional intelligence. Comprehensive definitions contain emotional intelligence as part of the intelligence as a whole, as we have already pronounced. The measurement of intelligence and the theories of intelligence also talk about the emotional intelligence related aspects. मतलब जब आप मेजरमेंट, इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के जो आइटम्स हैं जिनकी मदद से हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, उनको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के भी कंपोनेंट आपको मिलेंगे। और दूसरी तरफ अभी हमने 3 थ्योरी की बात की, स्पेसिफिकली थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में जो गार्डनर और स्टर्नबर्ग और गिलफोर्ड का इंटेलेक्ट मॉडल की बात की, वो सब इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें कंटेन है, उसके पार्ट्स हैं। जैसे अब एग्जाम्पल भी है, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ऑफ गार्डनर। गार्डनर का जो बाद में 7 था, 8 हुआ, फिर 9 हुआ, तो 9 जो क्लासिफिकेशन है इंटेलिजेंस का, उसमें इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी है, और वो जो डायमेंशन है दैट इज़ वेरी मच क्लोज टू द कंसेप्ट दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. Practical intelligence of Sternberg is also very close to the definition of emotional intelligence and the concept of emotional intelligence. तो ये 2 स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गए, और फिर इन थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल को भी आप जानते हैं कि कितने सारी चीज़ें उसमें हैं, और वो उसमें ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि इमोशनल डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट कवर्ड, एंड ऑल दीज हैव aspects of emotional intelligence as well. If we analyze different theories, especially the multiple theories of intelligence, जिसमें 3 थ्योरी की हमने चर्चा भी की, we find emotional intelligence narrated in one form or another. तो सब जगह आप देखेंगे कि चाहे वो इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के आइटम्स हो उसमें, या फिर खास करके जो थ्योरीज है उसमें भी थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की जितनी थ्योरीज हैं वो सब इमोशनल आस्पेक्ट को कवर अप करता है. Analysis of measurement of intelligence and its different scales also reflect towards emotional aspect of intelligence as a concept reflected. तो उसके मेजरमेंट में भी, इंटेलिजेंस के मेजरमेंट में भी छुपा हुआ है कंसेप्ट, बल्कि निहित है, उसमें डायमेंशंस है इमोशनल इंटेलिजेंस के मेजरमेंट में भी. द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ बीन एडवांस्ड बाय गोल्डमैन. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे हम लोग जब डेवलपमेंट की बात करेंगे ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में, तो गोल्डमैन की चर्चा फिर आएगी. लेकिन ये गोल्डमैन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंस को एज ए कंसेप्ट रिवोल्यूशनाइज करने में याद किए जाते हैं. सो द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ बीन एडवांस्ड बाय गोल्डमैन 1995.
Emotional intelligence is a type of social intelligence that involves the ability to monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them, and to use the information to guide one's thinking and actions. तो ये कह रहा है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, हाउ यू विल, और वही फिर इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, मुख्य रूप से इंटरपर्सनल, और ये डिस्क्रिमिनेट करता है लोगों को इमोशन के आधार पे, यूज द इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शंस. इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एबिलिटीज दैट मे बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 डोमेन्स. मतलब ये एक तो कहता है कि सेल्फ अवेयरनेस, एक डायमेंशन इसका सेल्फ अवेयरनेस का, दूसरा मैनेजिंग इमोशन, तीसरा मोटिवेटिंग वन, चौथा इम्पैथी, पांचवा और अंतिम हैंडलिंग रिलेशनशिप्स. So, emotional intelligence involves abilities that may be categorized into 5 domains. पहला सेल्फ अवेयरनेस, मतलब ऑब्जर्विंग वन सेल्फ, अपने को भी देखना. मैनेजिंग इमोशंस, हैंडलिंग फीलिंग्स. मोटिवेटिंग वन, चैनलाइजिंग इमोशंस टू रियलाइज गोल. इम्पैथी, सेंसिटिविटी टू अदर्स फीलिंग, मतलब यू आर सेंसिटिव इनफ फॉर द feelings of other. And handling relationships, managing emotions in others. तो ये 5 जो डोमेन है इमोशनल इंटेलिजेंस के, जब इसके मेजरमेंट की बात करेंगे या इसके अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, तो सेल्फ अवेयरनेस के टर्म में, मैनेजिंग इमोशंस के टर्म में, मोटिवेटिंग वन के टर्म में, इम्पैथी के टर्म में, और हैंडलिंग रिलेशनशिप के टर्म में हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझेंगे भी और मेजर भी करेंगे. लेट अस टेक सम डिफिनीशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. एक डिफिनीशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परसीव, यूज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड हैंडल इमोशंस. और आगे आएगा, इमोशन को भी हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे लव है, फियर है, हेट है, दीज आर इमोशंस. So emotional intelligence is defined as the ability to perceive, use, understand, manage and handle emotions. One definition is of Goldman. Goldman define करता है, the array of skills and characteristics that drive relationship performance is emotional intelligence. How you do justice with the emotion, the relationships, and how do you manage the relationship with others, it depends on your emotional intelligence. Emotional intelligence refers to the ability to perceive, control and evaluate emotions. अब इमोशंस जब आता है तो बड़ी तेजी से आता है. गुस्सा, कभी आप बहुत बेचैन व्यग्र हो गए, बहुत खुशी से, बहुत दुख से. Under those circumstances, how stable you are is the indicator of the level of your emotional intelligence, and that is being reflected in the definition. Emotional intelligence refers to the ability to perceive, control and evaluate emotions. Emotional intelligence is the ability to monitor, ये एक definition है, Peter Salvo एंड जॉन मेयर, फेमस आदमी है इस फील्ड में, मतलब इमोशन के फील्ड में, जॉन मेयर. ये कई बार आएंगे, इनकी
चर्चा आगे भी जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये इनका डेफिनेशन बहुत कम्प्रहेंसिव है और इसका फर्दर एनालिसिस भी हम लोगों ने किया है. सो इमोशनल इंटेलिजेंस एज पर पीटर्स सेल्वे एंड जॉन मेयर इज the ability to monitor one's own and others' emotions. Manage one's monitor one's own and others' emotion. To discriminate between different emotions and level them appropriately, and to use emotional information to guide thinking and behavior. तो कई पार्ट हो गए इसमें. पहला कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जो मॉनिटर करता है अपने और दूसरे के इमोशंस को. दूसरा, ये डिस्क्रिमिनेट करता है डिफरेंट इमोशंस के बीच में. तीसरा, ये लेवल करता है अप्रोप्रिएटली मतलब इमोशंस को, ताकि इसको यूज किया जा सके डिफरेंट थिंकिंग एंड बिहेवियर प्रोसेस में. सो पीटर सेलोवे और जॉन मेयर की डिफिनीशन आपने देखा. और इफ दिस डिफिनीशन, दैट इज the Salve and Mayer's definition, was later मतलब this definition जो हमने अभी दिया was later broken down and refined into four proposed abilities that is involved in the concept of emotional intelligence, and these four are perceiving, using, understanding, and managing. और क्या? इमोशंस. मतलब इमोशंस को परसीव करना, यूज करना, अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना, एक साथ उसको आप समझ लें. सो ये जो डिफिनीशन सेल्वे का उसको बाद में जब ब्रेक किया गया तो ये निकल के आया कि देर आर फोर प्रपोज्ड एबिलिटीज इन द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड दोज आर परसीविंग इमोशन, यूजिंग इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड मैनेजिंग इमोशन. These abilities are distinct yet related. ये चारों एबिलिटीज, चाहे वो परसीव करने का हो इमोशन को, यूज करने का हो, या अंडरस्टैंड या मैनेज करने का हो इमोशन को, सब अलग अलग है होते हुए भी आपस में संबंधित है. इमोशनल इंटेलिजेंस एक और ये डिफिनीशन एनसीईआरटी की किताब या एनसीईआरटी की किताब से इसको, या एनसीईआरटी को ही डिफिनीशन कहेंगे इसको. सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाई accurate appraisal, expression and regulation of emotions. It is the feeling side of intelligence. मतलब ये भी यही कह रहा है कि अलग नहीं है इंटेलिजेंस ही, लेकिन वो इफेक्टिव डोमेन फीलिंग साइड से रिलेटेड है. और दूसरा कि सेट ऑफ स्किल्स है जो अंडरलाई करता है एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशन. मतलब मैनेज करता है इन सम वे और अदर द इमोशन of the individual. In simple term, emotional intelligence refers to the ability to process emotional information accurately and efficiently. So in this way, we could see that emotional intelligence, though is a dimension or part of intelligence, but due to its but due to work done in the field and exhausted the area, it has got the identity of a separate concept, and in the process we could define emotional intelligence in many ways, and ultimately came to know that it is about perceiving emotion, it is about using emotion, it is about understanding emotion, it is about managing emotion. So that is a type of intelligence that perceive, use, understand and manage emotions. In the same time, it is about one's self-awareness,
and managing emotions, motivating ones मतलब others, empathy उनके दूसरे के इमोशंस के बारे में भी केयर करने का, और टू मैनेज और हैंडल द रिलेशनशिप between or among others. So in this way, emotional intelligence as a concept we could learn gradually. You will know more and more when we shall discuss other aspects of emotional intelligence and related aspects. Thank you.